So once again, good morning, everyone. Good morning, Yeah, sir. yeah. Good Good morning, morning, sir. sir. Morning, sir. Good morning. I hope all of you had a wonderful first year. Okay, I know it was a kindly a rushed one because you people admitted very late, almost 6 months late, and because of that, your first semester and second semester was totally in rush. In fact, for the second year also, you are starting approximately 4 to 5 weeks late. Means for higher semesters, we actually conducted even the term test one, and after that, actually people are joining. Because of that, uh, you people have not got any breaks as such. Okay, so काफी लोग थोड़े बोर्ड है. 8 महीने से कंटिन्यूअस पढ़ाई चल रही है. कुछ ना कुछ असाइनमेंट, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट, सबमिशंस, सारी चीजें एकदम एक के पीछे एक चल रही है. Okay, but unfortunately that was the thing that we had to deal with because of the pandemic. Now slowly we are getting in line. Now this semester is slightly staggered, but next semester onwards you will be on a regular what you can say timeline, and there of course you will start getting your winter vacation as well as your summer vacation. Okay, for the timing, your semester is now started already, and first 2 weeks it was an induction come internship program that was organized by the institute. Okay, now your lectures and practicals are going to start from today, and you're also going to have a small 5 day vacation, what you call as midterm break, from 10 to 14. That is specifically for Ganpati. Okay, so again you will get a small breathing period. Okay, now before we start with the things of the second year, there are few things I wanted to uh, tell you people so that we can have the smooth functioning of this second year also. Okay, the first thing and foremost, yesterday ma'am has told you to rename your display names. I can see some people are still in first year. Okay, we have already completed our first year and now we are in the second year. So please do rename them as per your form, as per the format that the madam has given. Okay, and this is the format we will follow in the higher semesters also. So please stick to it, and it helps us also to identify you people easily since we are in the online mode. Now, in the first year, what we have dealt basically or mainly with the courses which are related to a broad class or the breadth of the so what you can say engineering domain, where you have subjects like physics, chemistry, you have subjects like mechanics, drawing, BWE, etc. You also had a programming subject. Now, from the second year, we are actually going to start with the subjects which are related to the IT or information technology. Okay. Now the thing is, when we talk about the courses, what we are going to teach you is, of course, designed by the university. Now, since it is a university syllabus, many times we have restrictions on what we are actually going to cover as a part of the subject, because it is a syllabus on which you are also going to face your exams. So we have to confine ourselves to those syllabus. But when it comes to the actual requirements, the industry is changing very fast, specifically for the IT domain. So many time the syllabus lags because whenever the revision happens, okay, it takes 4 years to revise your entire syllabus, starting from first year to final year. And by the time that changes are done, okay, there is a new technology or new advancements that happen in the IT industry. Now we always need to cater these new requirements, and for that, the department is also doing lot of co-curricular activities. We arrange lot of student development programs. We have guest lectures. We have expert lectures. We also arrange seminars, workshops. We also have a professional branch
called as Computer Society of India, that is CSI. I will request all the students to be part of that CSI student committee. Okay, if you are not part of committee, at least become a member of CSI, because that will add in your resumes that you are a part of a professional body. Okay, now see, this second year onwards, we are actually going to start your resume building. Okay, so that membership also will help you in resume building. Plus, there are a lot of activities which are done by CSI which you can attend freely in our college, also in the other colleges. Okay, or in some cases there will be nominal fees, or you will have a concession in the fees for the different CSI activities. Okay, apart from that, we also have a club called as C3, Core Coding Committee. Okay, it is a peer learning group. That means it is a group by the students for the students. Okay, so here the students are going to help each other to learn various things. So you might be knowing something, so that knowledge you are going to share with your fellow students, your juniors, or even some cases your seniors. Okay, so there it will be a kind of student learning activity. Of course, we as a faculty do monitor it, and we also call different guests and alumni for various sessions in that. Okay, we also have a very active alumni committee. Professor Anaga Patil is looking after that alumni committee, and through which we have regular interactions with the alumni who will guide you for your higher studies, placement, different activities, what you should learn, okay, and how you should prepare overall. Okay, so a lot of things are done. Apart from that, in our institute also, there are a lot of co-curricular and extracurricular activities. You all are aware of student council already, sports committee. Okay, you were also introduced for ESAIL in the last month itself by uh, Chandan Kulwankar sir and Shaista Khan madam. Okay, apart from that, there are a lot of other committees also in which you can work and you can have overall development. Okay, in the next month, we are also going to have our flagship event of the institute and the department, that is hackathon. It is scheduled on 1st and 2nd October. Currently, it is in the online mode, but when it is offline, there is a lot of things that has to be done, and actually it is a good learning curve when you take part in it. Okay, currently of course you will be as a organizing committee member, but over slowly you can progress, and then you can also take part in the hackathon activities. Okay, so there is a lot of things that is going to happen now onwards, so I request all the students to take keen interest and part in all these activities, because they will help you to do overall development. Okay, we don't want our students to be bookworms, because if you go to industry also, the industries are normally not preferring bookworms. Okay, they want students which are all rounder. Okay, so that's why we are doing all these things. Okay, of course there are technical aspects also, and there is a personality development building also that will happen through these activities. Okay, but while doing so, always keep a focus on your academics. Okay, be regular. Today also I saw it was 9:15, and we all have to wait for you people to join in for the lecture. Okay, so that things should not happen. Be punctual. Okay, do all the things what are assigned to you on a regular basis, so that there is no baggage that you have to carry. Okay, or there is no rush at the end moment. And uh, s- whatever we are instructing, please follow them. Okay, otherwise there can be some sorry incidents that may happen which we want to avoid. Okay, so please follow the instructions given by your faculty members carefully, and avoid any unwanted incidences. Okay, so this is what I wanted to address from my side. Now, before we proceed, let me introduce to you your class in charge for this semester. So, the class in charge for this semester is Dr. Archana Ikote. So, you can see Hello, her on the friends. screen. Good morning, everyone.
If you Yeah. have any problem during the semester, you can contact me at any time. Okay. She is having approximately 21 years of experience over here. Okay. Recently, she has completed her doctorate, and she is the one who is going to be class in charge for you. Apart from that, we also have a professor who has joined recently, Dr. Thaksan Parvat, who is going to take you a subject, and of course, all the other faculty members of IT department will be taking different subjects or projects, etc. Okay. One more thing. This semester onwards, you are also going to have a semester project. Of course, we have a session at 2 o'clock, right, sir? Pingle, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. That is called as a mini project in your syllabus, which will be there from second semester to sorry third semester to sixth semester, and then in the final year you are going to have your final year project. Okay, these projects are actually a really good learning curve for you. In fact, there is a transformation now in the teaching learning process. Okay, that means from the subject based learning now we are slowly moving to project based learning. Okay, and that's why you will see that in your syllabus there are a lot of projects. Okay, you have course projects, you have these mini projects, you have final year projects. Like that, there are a lot of projects which has been introduced. Okay, now when it comes to the projects, okay, it is more like a student driven thing, because here in the projects the faculty members are going to be like your facilitators who are going to guide you. Okay, I'm saying guide you, I'm not saying teach you or tute you. Okay, teaching and tutoring will be done in the lectures or in the courses, whereas project is where the faculty member is going to guide you. The students are expected to explore more and do things on their own. Okay, so there has to be a self drive that has to be there, and there is what you can say, just a second. Okay, so there is there is a process that we follow to assess you to this. Okay, we are going to do it very means we have been doing it for your higher semester very rigorously, and we will be also doing it for you people also very rigorously. Okay, so that's it from my side. So best of luck everyone for your future endeavors with this IT department, and let's make the things better for everyone, for you as well as for the faculty members, and let's have a good career path development for all of. Okay, so thank you. Thank you, sir. If you have any queries, I will like to address them, or ma'am will like to address them. Yeah. Yes, ma'am. And, I want to say that if anyone has any difficulty during the semester, they can contact me at any time. Uh, One more thing, you also been allotted proctors, right? Yeah. Okay, so everyone, please share the contact details of the proctor to your parents as well. Okay, because proctors are going are your something like your local guardians in this institute. Okay, who has your regular updates and information with them. So please forward that information to your parents as well, so that uh, whenever required, they can directly contact the proctor or even the class in charge. Okay, so please forward that information to your parents. Uh, if you have any queries, I will like to address them. Otherwise, Pingle sir will then continue with his lecture. Yes, Yeah. students, if there is any query, please. Yeah, I guess there are no queries. Then I will take the leave, and the Pingle sir will then continue with the lecture. So, Okay. okay, sir. Thank you, sir. Thank you very Yeah. much. Yeah. Yeah. Thank you Bye, all. Thank you, everyone. sir. Bye, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank madam. you, sir. Okay. Good morning, students. So today we are going to see the first lecture of our Java programming. So I am going to take the subject called as JPL, Java Programming Lab, and if you are just now our HOD sir has addressed us
that we are going to do a mini project also, and that mini project is in Java technology, right? So before starting the JPL actually subject, so let me share the syllabus so that you people will come to know what is the syllabus of our JPL, Java Programming Lab. Yes, can anybody tell me the screen is visible or no? Yes, sir. Yes, okay. Uh, See this. This is our subject, Java Lab. Okay. Now here in this particular case, so there is actually no theory paper at all, but we are going to do it all the practicals, right? All the experiments, right? But obviously, before going or before starting to any kind of practical, right, we must know what is the theory behind it, so that it will be very much easier for all of us to directly jump to the experiment. Okay. So in this particular subject, right, so first of all, the first thing is that we don't have any kind of theory paper, right? So that is very important thing. But even though we don't have theory paper, we have got lots of things that we are going to study, right? And because of the theory, right, a good theory, or you can say the good concept, right, we can able to do that. Okay. Uh, Rakesh. Oh, hello, Rakesh. Ah, yes, yes. Okay. So in the first module, you can say the prerequisites is basics of computer programming. So I hope that you people have done the programming of your subject called as SPA. So it is something that I'm assuming that you know what is something called as programming, but you don't worry about it. I'm going to take it right from scratch. It doesn't mean that I'm going to teach you the C language. Obviously we are going to do the Java only, but a programming concept, what is the meaning of programming? So there are the people who may say, we are much more you can say we are a lover of programmers. Some people will say, sir, we don't like programming at all. And some people say, sir, we are liking the programming, but we are not knowing, how to do the program, right? So there are some these category, three categories of the students that I can find it out. So I will do it for all these three categories, right? The students who are not liking programming at all, the students who are liking the programming, and the students who are liking the programming but they don't know how to do the programming, right? So that is what the three type of students these are there. But don't worry at all, I'm going to do it right from scratch. So this is what is prerequisite. The first is fundamentals of Java, that we are going to see it. Don't worry, even though it's two bigger chapter is there, but don't worry about that, because many of these are the problem listed it out, right? Then the second one is something called as, the what is the meaning of, object oriented technology, what is the meaning of array and strings and so on and so forth, right? And the program based on this, obviously. Next one is something called as the inheritance, packages, interfaces. These are some new terminologies that we are going to learn it. What is the meaning of it? Why it is required, right? And using this, what kind of projects, what kind of softwares we are going to make it. Okay, that we are going to do it in detail. Then there is something called as exception handling. It's very very interesting part. Let's say if you are doing a program in C and you stuck somewhere and you got some error, now the thing is, how can you solve the error? How can you debug the program? And that is what is something called as, how to handle the exceptions, right? And there is very beautiful thing is something called as multi-threading, right? अभी ये multi-threading होता क्या है क्या नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा. And the fifth and sixth, these are something like GUI programming, graphical user interface programming. So we will not go in detail first of all. Otherwise, it will something for you. It will be very very the detailed explanation of the syllabus, right? We will take it one by one. You don't worry about it. So let me start. Let me start
the fundamentals of computer, right? So because we must know what is the meaning of programming, so we first must know what is the meaning of computer, right? And what are the details of these fundamentals of computers. So let us see one by one, you know. So if anyone can say that what is the meaning of computer, computer होता क्या है, anyone? Yes, Aditya, Yes, sir. what is the meaning of computer? How you will define, what is a computer? Sir, we can say that a computer is a machine which can Yes. be programmed to carry out some operations. That means operations could be arithmetic or logical. Yes, It is, yes. we can say it is just kind of a device that helps us to make our logics and arithmetic operations much faster. Yes, very nice, very nice, very nice. So this is something like electronic device. Okay, computer is an electronic device. Okay. Now, layman means what, they don't know about the meaning of computer, but they know only the computer. They will not understand. Electronic क्या होता है भाई, device यानी क्या. तो ये थोड़ा सा हजम नहीं है, it will not digest. So how anyone can define, it's a commonly, C for commonly, O for operated, right? Operated, okay. Machine, right? It's a machine, right? It's a commonly operated machine. Anyone can use it. खाली IT इंजीनियर यूज करता है क्या, ऐसा नहीं है. Anyone can use it. So it's a commonly operated machine, right? Particularly particularly used for, now this is TER is very very important. You know what is TER is nothing but trade is nothing but a transaction. What he is saying, the meaning of transaction, right? Now transaction can be anything, transferring of data from one place to another place is something called as transaction. Okay, that is the meaning of trading, right? To trade. So for trade, E stands for education. E stands for education and R stands for research. So what I can say, it's a commonly operated machine, particularly used for trade, education, and research. Right now, this trading is nothing but a transferring of data, and this is what is something called as a once you are starting with the computer, right? It means it is what it is: trade, education, and research. Right, obviously everyone is using for its education, everyone is using for the research, everyone is using for the trade, right? It's very very important. Now let me tell you what is the meaning of or what are the types of computer, right? It's very very important. Why I'm telling you these basics, because we are feeding the instructions to the computers, and that is nothing but we are writing a program to the computer so that the program can able to understand it and it will execute it for us, right? That's why it is very necessary to understand what are the types of computers. This laptop, let's say, the lab computers, the home personal computers at your, these are something called as microcomputers. Right. So all of us knows, right? So anybody's tell us, I'm having a laptop, fine. Now laptop can be of any one of the company, HP होने दो, Apple होने दो, कौन सा भी कंपनी का लैपटॉप होने दो, डेस्कटॉप होने दो, राइट? पीसी, होम पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, होम पीसी आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर रहेगा, राइट? ऑल दिस कंप्यूटर्स आर समथिंग कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, right? So these are something called as microcomputer. So if anybody asks you, कौन सा type का computer है, so microcomputer, it is something called as home PC, right? Now there is something called as mini computers. तो ये कौन सा है? Mini computers are those computers who are actually used for radar applications. Think about that. Radar applications means if there is something that war is happening, and my computer wants to detect some objects in the air, राइट? कोई हेलीकॉप्टर इधर से उधर रीजन में आ रहा है, and my computers must able to watch on that. So these are something called as mini computers, right? Do not go
behind this particular name called as mini. Mini doesn't mean any short type of computers. Mini computers are multi-user computers. Multi-user computers, very very important thing. Okay. Now there are something computers called as mainframe computers. राइट ये जनरली मेनफ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है मालूम है? दिस इज द हाई एंड कैपेसिटी, राइट? बहुत ज्यादा डेटा रखने का है, राइट? आई वांट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द आधार कार्ड ऑफ द पीपल इन इंडिया, 130 करोड़ ऑफ पीपल, एंड आई वांट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आधार कार्ड. उसके अंदर भी बहुत सारा डेटा रहेगा, यू नो, लार्जेस्ट कैपेसिटी टू स्टोर द डेटा. I cannot keep it in microcomputer. I cannot use a computer, you know, which is something like microcomputer, home PC, और इसमें पे हम लोग इतना सारा डेटा नहीं रख सकते. So what we required something called as mainframe computers. 90% of industries, they are working on mainframe computer. They are using mainframe computer, right, to keep the largest amount of data, right? And last but not the least is something called as supercomputers. Now these supercomputers are the highest speed of the computers. So they are being used for satellite applications. Supercomputers. The first supercomputer has been built by India called as Param computer. उसका नाम था Param. If you are knowing that there is one institute, research institute called as CDAC. CDAC नाम का research institute है, वो है पुणे में, राइट? और उधर हम लोगों ने पहला कंप्यूटर बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया. इंडिया हैज मैन्युफैक्चर्ड वन फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड एज सुपर कंप्यूटर. विद दैट परम सुपर कंप्यूटर वी हैव सेंट द सैटेलाइट आल्सो, कॉल्ड दैट सैटेलाइट, द नेम वाज ऑफ दैट सैटेलाइट वाज पृथ्वी सैटेलाइट. सो सुपर कंप्यूटर. So just imagine the world where we are having these 4 type of computers and we are working on this microcomputer, right? ये माइक्रो कंप्यूटर है जिधर हम लोग उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं. नाउ द अंडरस्टैंडिंग इज, लेट्स से इफ आई एम रनिंग माय एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, लेट्स से आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन सी, इन जावा, इन पाइथन, इन ऑल, देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर. सो जो मैं प्रोग्राम मेरे माइक्रो कंप्यूटर में लिख रहा हूं, हेलो वर्ल्ड का रहने दो, कौन सा भी, कैन इट रन ऑन मिनी कंप्यूटर, कैन इट रन ऑन मेन फ्रेम कंप्यूटर, और कैन इट रन ऑन सुपर कंप्यूटर? अगर मेरा प्रोग्राम ये कौन सा भी टाइप का कंप्यूटर में रन हो सकता है, देन आई कैन से यस आई एम अ प्रोग्रामर, राइट? बिकॉज आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम इन सच अ मैनर दैट आई डजंट बॉदर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आई एम यूजिंग. I doesn't bother about what computer, what type of hardware architecture it is, but I am bothering about my program. I am bothering about my instruction. मेरा instructions मिनी कंप्यूटर में भी चलना चाहिए, मेन फ्रेम भी चलना चाहिए, सुपर में भी चलना चाहिए. ऑब्वियसली मैक्रो कंप्यूटर पे तो मैं चल रहा हूँ. आई एम वर्किंग ऑन माइक्रो कंप्यूटर, आई एम वर्किंग ऑन दिस, यू नो, होम पीसी, पर्सनल कंप्यूटर. सो मेरा कंप्यूटर पर्सनल पीसी पे चलता है तो ये तीनों पे चलना ही चाहिए. Now that is what is something called as प्रोग्रामिंग. तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग, राइट? सो इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट? मेरे को कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देना चाहिए. व्हाट आई विल से, लेट्स से आई वांट टू ऐड 2 नंबर्स, राइट? तो मैं बोलूंगा, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग लिखते हैं, चलो भाई ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, A is having 5, B is having 2, and there is one more variable called as C, and then I want to add A plus B, right? तो कंप्यूटर को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, भाई A नाम का वेरिएबल है और 5 ये वैल्यू है. दिस वैल्यू आई एम गोइंग टू कीप इट इन दिस दैट पर्टिकुलर बॉक्स. दैट बॉक्स का नाम क्या है? A. B is the name of the box where I am going to keep the value 2. And there is one more box called as C, which is empty box, and in this empty box I am going to keep the result of this both, 5 plus 2, right? तो जो 7 आएगा, that value what I will come, that I want to keep it in C. ये इंस्ट्रक्शन मुझे देने का है कंप्यूटर को. So what I required something called as language. Now my question is, भाई language क्या होता है? What is the meaning of language? Language is nothing but a set of rules and regulations
प्लस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रामर. ग्रामर होता है एंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज, राइट. सो व्हाट लैंग्वेज यू स्टडीड इन योर लास्ट सेमेस्टर? सी प्रोग्रामिंग, राइट. तो आपके क्वेश्चन में, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, भाई उसको सी क्यों बोलते हैं, ए क्यों नहीं बोलते, बी क्यों नहीं बोलते, राइट. व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओनली सी प्रोग्रामिंग, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज ए प्रोग्रामिंग, बी प्रोग्रामिंग? अपना अल्फाबेट तो ए से स्टार्ट होता है. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई द इट इज कॉल्ड एज सी लैंग्वेज? एनीवन? ऋषिकेश, प्रदीप, आदित्य? हेलो हेलो. Sir, can we say, because I had read it somewhere that before C, a language called B was also developed. हाँ. So to we can say after it is just a preceding language. Yes, more version of and B. before B, I will tell you there was a language something called as starting from A also, and that A, you know, it is something called as assembly programming language. असेंबली प्रोग्रामिंग. सो ए से एक्चुअली शुरुआत था, राइट. असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग जो है ना, दिस प्रोग्राम वट एवर यू राइट इन असेंबली लेवल, इट इज डायरेक्टली टॉक विद द हार्डवेयर, डायरेक्टली टॉक विद द हार्डवेयर. जस्ट इमेजिन कि ये मेरा लैपटॉप है, उसमें ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, खाली हार्ड डिस्क है, माउस लिया मैंने, मदरबोर्ड लिया. सो ओनली हार्डवेयर इज देयर, ओनली हार्डवेयर. हार्डवेयर इज अ डेड सिस्टम, राइट. एंड आई वांट टू मेक इट लाइव, मुझे उसको लाइव बनाने का है. तो लाइव करने के लिए व्हाट आई रिक्वायर्ड, यू नो, आई रिक्वायर्ड समथिंग लाइक प्रोग्रामिंग, राइट. लेकिन प्रोग्रामिंग, भाई अपने कंप्यूटर को तो अंडरस्टैंडिंग है बाइनरी लैंग्वेज, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी? 0 and 1, 0 and 1. Now can human being understand this 0 and 1? Not at all, right. So there was something called as a assembly programming language. ये पहले दुनिया में आ गए भाई. Assembly programming language which can talk with your directly microprocessor, which can directly talk with the hardware of each component present in the motherboard, or each component present in the keyboard, mouse, monitor, everywhere. So you can write a program directly talk with the hardware, which is something called as assembly programming, right. And which was also very difficult to remember. तो उसके लिए फिर लोगों ने यानी एक पर्सन ने और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, उसका नाम था सी प्रोग्रामिंग. यू नो व्हाई कॉल्ड एज सी? सी इज नथिंग बट अ कंपाइलर. सी को हम लोग बोलते हैं कंपाइलर. बिकॉज ऑफ कंपाइलर द लैंग्वेज वाज कॉल्ड एज सी प्रोग्रामिंग, राइट. सो नॉट बिकॉज ऑफ, यू नो, ए बी एंड सी, राइट. इट वाज बिकॉज ऑफ द कंपाइलर. और कंपाइलर करता क्या है? कंपाइलर ये करता है कि जो भाई आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है, printf, scanf, right, whatever it is, you know, for, while, whatever जो आपने अभी किधर कुछ तो किया रहेगा, right, whatever instruction you are writing, right, like the program using something like language, using language कौन सा है? अपना C programming. How the computer will understand, right, how the computer will understand? Let's say if I'm talking about scanf, scanf आपने किया रहेगा कुछ तो, right, something is there, right, %d, so and so, right, double quotes, complete, comma, ampersand वगैरह, वो सब सिंटैक्टिकली हम लोग को लिखना पड़ता है. हाउ द कंप्यूटर अंडरस्टैंड दिस? scanf, printf, hash include stdio.h, whatever you are written the program, now who is going to understand? There has to be something called as compiler. ये कंपाइलर किसका होना चाहिए? जो लैंग्वेज में आपने प्रोग्रामिंग किया है. आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया है, सी लैंग्वेज का कंपाइलर होना जरूरी है. Without compiler, who is going to compile your program? How the computer understand what you have written? And that's why it is something called as compiler. So compiler का काम क्या है मालूम है? Indirectly compiler का काम है syntax चेक करने का. syntax, सेमीकोलन डाला है ना, डबल कोट्स डाला है ना, एम्परसैंड डाला है ना प्रॉपरली, स्कैनफ का सब कुछ, ऑल लेटर्स आर केस सेंसिटिव बराबर लिखा है ना, all these things, all these jobs are taken care by something called as compiler. And not only that, it is going to something check called as semantics. Semantics क्या होता है भाई? Semantics, what is the meaning of semantics? If I am saying, let's say int a, ये आपने कुछ तो किया रहेगा, and a is equal to 10, that is also you have done it, right? Now what I'm trying to say, you know, a ये एक integer variable है, यानी I can able to keep only 1 to dash 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 number,
only that particular range of the numbers I can able to keep it in A. Now let's say if I am writing A is equal to B, syntactically correct है ना, लेकिन logically it is wrong. Logically it is wrong. Logical क्यों? Because my variable A is integer type and I am going to keep what? The character inside integer. Character inside integer. So logically it is wrong. उसका ही मतलब है semantics is wrong. Semantics का मतलब है meaning. The meaning is not correct. That is semantically right. It is wrong and syntactically it is wrong or correct. So syntax check करने का और semantics check करने का, ये दोनों का काम होता है कंपाइलर का. That is the meaning of compiler, right? Now ये कंपाइलर अगर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है. let's say now we are talking about Java programming. जावा में लिखो, आप HTML में लिखो, और कौन से भी दुनिया में अभी जितने लैंग्वेजेस है, हजारों लैंग्वेजेस है, कौन सी भी इसमें लिखो भाई, उसका कंपाइलर होना जरूरी है. उसका कंपाइलर हमारे सिस्टम में होना जरूरी है. उसका कंपाइलर ये चारों में होना जरूरी है. नाउ इफ आई राइटिंग अ प्रोग्राम सी प्रोग्राम अगर मैंने लिखा है, उसका कंपाइलर है माइक्रो कंप्यूटर का. सेम कंपाइलर अगर मिनी कंप्यूटर में रहेगा, सेम कंपाइलर इफ इट इज प्रेजेंट इन मिनी कंप्यूटर, देन ओनली माय प्रोग्राम इज गोइंग टू रन ओवर हियर. If same compiler is present over here, then only. If same compiler is present over in supercomputer, then only my program is going to run. Otherwise, जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ भाई, मैं इंडस्ट्री में जाके तो मैं मेन फ्रेम पे काम करूंगा. If I have been selected as a junior scientist like that in DRDO or like that, then I will work on the supercomputer. If I am working in like army or military, then I will work on the mini computer. Then whatever I have studied, the writing of the programs, how can I able to write a program in mini computer if I am not knowing what is the compiler of C which they are using in mini computer? What is the compiler of C in mainframe computer? जो मैं प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ, सेम प्रोग्राम और सेम कंपाइलर, इज इट प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स? तो ये आप उनको चेक करना पड़ेगा. दिस वी हैव टू चेक. The people in industry will not say, whatever you have studied, please come and same program you type it over here and just tell me what is the output of the program. ऐसा नहीं चल रहा है, right? So that's why it is very important to study this in detail, right? So compiler, and there is something assembly program तो मैंने बोला है, और whatever programming, the assembly or assembler, you can say compiler, right? What is the job of that? Take a high level of programming. हाई लेवल यानी इंट ए, ये हाई लेवल, इट्स नॉट बाइनरी लैंग्वेज. ये बाइनरी लैंग्वेज है ही नहीं, राइट? सो हाई लेवल लैंग्वेज ले लो और आप उसको बाइनरी पे कन्वर्ट करो, जीरोस एंड वंस. सो टू कन्वर्ट इनटू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज, वी रिक्वायर दिस. आइदर वी रिक्वायर असेंबलर और वी रिक्वायर द कंपाइलर, राइट? ये दोनों जरूरी है. देन ओनली आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड अ स्कैनएफ. जो आपने सीखा है सी प्रोग्रामिंग में, स्कैनएफ यानी क्या? टेक द इनपुट. किधर से लेने का है इनपुट? लेना किधर से है? एम आई गिविंग द इनपुट लाइक दिस? ये ले लो, हाथ से ले लो, कंप्यूटर वो हाथ से खींच के इनपुट ले लेगा. इट इज नॉट लाइक दैट. सो आई एम एंटरिंग द डेटा थ्रू द कीबोर्ड. कीबोर्ड के अंदर क्या है? कीबोर्ड के अंदर कौन सा सर्किटरी रहता है? कीबोर्ड के अंदर होता क्या है? जो मैंने इधर ए टाइप किया, सी आई टाइप ए and you can able to see A on the screen. कैसा होता है भाई ये? Because this is also the instruction. ऐसा थोड़ी है कि मैं कंप्यूटर लैंग्वेज लिखेगा, then only it will get compiled, then only you can able to see the output. ये आउटपुट आ गया ना, see YOGESH, I am typing my name and I can see the output also. Why I should write printf Yogesh, include con io.h, include stdio.h? इतना क्यों लगने का भाई? मेरे तो नोटपैड में तो डायरेक्टली योगेश करके आ रहा है ना. आर यू गेटिंग? दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग. आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मैं प्रोग्राम क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ. इवन दो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सो आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर. तो कैलकुलेटर भी मेरे पास है. आई एम यूजिंग द एक्सेल ऑल्सो for doing these mathematical operations. Then why need the programming again, right? So programming का role ही अलग है. The model of program is programming. Why I need a program, right? It is a different kind of
यू नो द थिंकिंग एस्पेक्ट, मुझे थिंक करने का है कि मैं प्रोग्राम क्यों लिखूं जो कैलकुलेटर में नहीं है, राइट, और वो मेरे प्रोग्राम में है, और वो मेरा प्रोग्राम चल रहा है, एंड देन द पीपल आर यूजिंग माय प्रोग्राम टू डू द कैलकुलेशन विच इज नॉट प्रेजेंट इन कैलकुलेटर बट विच इज प्रेजेंट इन माय प्रोग्राम, देन यू कैन से कि यस भाई ये अपना प्रोग्राम है. सो कैलकुलेटर इज ऑल्सो प्रोग्राम ना, राइट. सो दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, the set of programs, the set of programs, ऐसा बहुत प्रोग्राम लिखो, the set of programs is something called as what, software. यानी मैंने अभी टर्मिनोलॉजी यूज किया हार्डवेयर, राइट. यू पीपल विल से सर आई एम स्टडिंग नाउ प्रोग्रामिंग, यू नो व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर, राइट. अरे मेरा डेड मशीन है, हार्डवेयर है, उसको मुझे प्रोग्रामिंग लाइव करने का है, तो लाइव करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर होना चाहिए. तो कौन से डेड मशीन को लाइव करने का है? सो डेड मशीन यानी क्या, तो हार्डवेयर यानी क्या, वही तो मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए ना. आई कैन नॉट से नो आई एम यूजिंग ओनली माउस, आई एम यूजिंग दिस थिंग, राइट. नॉट लाइक दैट. इवन दो वॉट एवर यू आर यूजिंग आई मस्ट नो इट, राइट. आई मस्ट नो इट. माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है भाई, मदरबोर्ड क्या है, मैं ए टाइप करता हूँ तो वो जाता किधर है, राइट. वो जाता है मॉनिटर में कैसे दिखता है, मॉनिटर के ऊपर दिख कैसे रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर. इफ आई नो इट देन आई कैन से स्कैनएफ क्या होता है. इफ एनीबॉडी विल आस्क मी, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैनएफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंटएफ, देन आई कैन से इमीडिएटली स्कैनएफ का मतलब है कीबोर्ड के अंदर एक रैम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बफर. टेक अ कैरेक्टर फ्रॉम बफर एंड स्टोर इट टू द रैम. मदरबोर्ड के ऊपर रहता है रैम, सीपीयू के ऊपर रहता है रैम, के अंदर स्टोर करो. That is something called as input, right. Now you should ask, you know, RAM में किधर स्टोर करने का, कौन से लोकेशन पे स्टोर करने का, who is giving instruction, right. If somebody some student came in this particular lab, then I will say, you know, sit in this particular chair, ये चेयर में बैठ जाओ, right. The chair is for reserved for this particular person. Now data जो A आता है, A equal to 5 किधर रखने का, A किधर रखने का, राइट. बी किधर रखने का, सी किधर रखने का, तो ये तो रैम में स्टोर हो गया ना. देन आई विल से प्रिंट एफ यानी क्या, ये रैम से उठाओ डेटा एंड देन यू डिस्प्ले इट ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस. सो इनपुट से ले लो, इनपुट यानी क्या, टेक समथिंग फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल आजू बाजू के डिवाइस. तो पेरिफेरल क्या मतलब है, माउस भी आएगा इनपुट में, कीबोर्ड भी आएगा इनपुट में. नाउ स्टैंडर्ड डिवाइस इज अ कीबोर्ड, पहले माउस था ही नहीं, राइट. पहले माउस ही नहीं था. इसके लिए सी लैंग्वेज, इफ यू आर रनिंग द सी लैंग्वेज इन द कंसोल यूजर इंटरफेस, देयर इज नो जीयूआई, यू कैन नॉट एबल टू रन द माउस ओवर देयर. माउस दिखता ही नहीं है. व्हाई माउस नहीं दिखता है? बिकॉज माउस इज नॉट अ प्राइमरी डिवाइस, माउस इज नॉट योर फर्स्ट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस. तो उधर से डेटा आएगा, रैम में स्टोर करो. रैम बाहर से डेटा आएगा, रैम में स्टोर करो, उसका मतलब हो गया इनपुट. रैम से डेटा ले लो और मॉनिटर के भी दिखाओ, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज आउटपुट. सो इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैनएफ, तो स्कैनएफ का मतलब क्या है, टेक अ डेटा फ्रॉम कीबोर्ड्स. तो कीबोर्ड के यहाँ किधर बैठा है वो डेटा है किधर. इफ आई एम टाइपिंग समथिंग ऑन द कीज, मैकेनिकल कीज है ना, ये मैकेनिकल है कीज, ये किस के ऊपर मैं प्रेस कर रहा हूं, तो जाता किधर है वो डेटा, डेटा जाता है अंदर कीबोर्ड के अंदर. कीबोर्ड के अंदर है क्या, कीबोर्ड के अंदर है रैम, छोटा सा मेमोरी है, वो छोटा सा मेमोरी है, उसको हम लोग बोलते हैं बफर, टेम्पररी मेमोरी, उसके अंदर जाके बैठता है, राइट. तो स्कैनएफ क्या करता है, टेक अ कैरेक्टर फ्रॉम दिस. सो इधर जो बैठा है, राइट, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कंसोल, एंड दैट्स व्हाई यू आर एडिंग व्हाट, con.io.h, console.io.h. कंसोल का मतलब क्या है, टेम्पररी मेमोरी प्रेजेंट इन पेरिफेरल डिवाइस, राइट. नो ये डिवाइस से, ये कीबोर्ड से डेटा ले लो और किधर लाके रखो, रैम में लाके रखो. रैम में किधर जाके बैठेगा वो डेटा, हु इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन. आई हैव नॉट सेंड द इंस्ट्रक्शन, मैंने तो खाली स्कैनएफ लिखा है भाई. आई हैव नॉट टोल्ड, यू नो, द इन मेमोरी आई एम हैविंग 2 GB ऑफ रैम. 2 GB रैम बहुत हो गया, राइट. वी नो इट, यू नो, 2 बाइट्स रहता है, बाइट्स, राइट. 2 बाइट है खाली अपना इंट ए, 2 बाइट का है.
2 बाइट और 1 GB, मेरे पास 1 GB या 2 GB, नाउ 2 GB भी नहीं, 8 GB रहते हैं अपने पीसी पे. So in so many locations, so many houses are there. Where I'm going to keep that A, where I'm going to keep that 2 and whatever it is. Who is going to take a decision? There is something called as a DMA controller. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का कंट्रोलर रहता है. ऑल दीज आर समथिंग कॉल्ड एज माइक्रो कंट्रोलर्स. बाय द वे, हर एक डिवाइस के अंदर माइक्रो कंट्रोलर है. राइट नाउ यू विल कंफ्यूज, यू नो सर अभी आप माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे थे, अभी ये माइक्रो कंट्रोलर किधर से आ गया? तो माइक्रो कंट्रोलर इज एवरीवेयर. इन माय वॉच देयर इज अ माइक्रो कंट्रोलर, इन योर वॉच देयर इज अ माइक्रो कंट्रोलर, इन वॉशिंग मशीन देयर इज अ माइक्रो कंट्रोलर, इन रेफ्रिजरेटर देयर इज अ माइक्रो कंट्रोलर, इन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देयर इज अ माइक्रो कंट्रोलर. माउस के अंदर माइक्रो कंट्रोलर है, कीबोर्ड के अंदर माइक्रो कंट्रोलर है. राइट, फैन के अंदर माइक्रो कंट्रोलर है. चलता है ना, इसी डायरेक्शन में चलता है, ऐसा ऐसा चलता है, बाद में ऐसा चलता है, ऐसा कुछ नहीं करता है. हु इज गिविंग इंस्ट्रक्शन? दैट इज अ डेडिकेटेड प्रोग्राम. सो प्रोग्राम रहता है उसके अंदर. माइक्रो कंट्रोलर इज समथिंग लाइक प्रोग्राम. वो आप अभी हम लोग को, यू नो, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द हार्डवेयर एक्चुअली, बट आई एम गोइंग टू मेक अ सेंस कि होता क्या है अंदर. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंटफ, प्रिंटफ यानी मेमोरी से डेटा ले लो और मॉनिटर के किधर डालो, वेयर आई एम गोइंग टू कीप द मॉनिटर. मॉनिटर तो स्क्रीन है ना भाई, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे अगेन देयर इज अ माइक्रो कंट्रोलर भाई. माइक्रो कंट्रोलर है. नो दैट इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज अ टेम्पररी मेमोरी. तो each peripheral device is having temporary memory, and that temporary memory is called as a buffer, and that buffer is nothing but a locations, you know. It's like a temporary small memory. Now अपना RAM, मेन रैम इन माइक्रो प्रोसेसर यानी जो मदरबोर्ड है उसके अंदर जो रैम है वो रैम ही है. इट्स प्राइमरी मेमोरी. राइट, और हर एक डिवाइस के अंदर उसमें भी रैम है, लेकिन उसमें छोटा सा रैम है. इट्स नॉट लाइक 2 GB 4 GB ऑफ लाइक रैम which is there in CPU. Right, so take the characters from the RAM and then display it on the monitor. मॉनिटर को डिस्प्ले. हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंटफ. आपने कुछ तो किया रहेगा, प्रिंटफ. नाउ प्रिंटफ, दिस इज अ लाइब्रेरी, दिस इज अ प्रोग्राम व्हिच इज रिटन बाय सी. जिसने लिखा है उसको आप थैंक्स बोलो. वी आर यूजिंग डायरेक्टली रेडीमेड प्रोग्राम. राइट, व्हाट आई एम सेइंग, स्कैनफ, प्रिंटफ. स्कैनफ यानी कीबोर्ड के बफर से डेटा उठा के रैम में डालो. स्कैनफ कितना बड़ा काम करता है वो, और कितना माइक्रो सेकंड में करता है, फटक से हो जाता है. और इधर से उठा के उधर डालो. राइट, वी आर यूजिंग द रेडीमेड लाइब्रेरी ऑफ सी. सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सी का लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग. राइट, ये प्रोग्राम तो मैंने नहीं लिखा है और हम लोग नहीं लिख रहे. असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग हम लोग लिख रहे हैं क्या? बाइनरी लैंग्वेज में दैट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग आर वी गोइंग टू राइट? नॉट एट ऑल. हम लोग तो बुढ़े हो जाओगे फिर. एक प्रोग्राम, अरे भाई, और एक रैम का एक लोकेशन ढूंढो. And that's why C programming, you know, C is a powerful programming language, right? And because of this powerful program, powerful का मतलब क्या होता है मालूम है? Because of C there is a concept called as pointer. No, pointer, what is the meaning of pointer? Pointer क्या करता है? Point करता है. किसको point करता है? Location को point करता है. Where it is going to point? The each pin of this IC of the computer. लेट्स से ये सब मैंने बंद किया और ये सब मॉनिटर का ये ढक्कन ओपन किया, उसके अंदर सर्किट ब्रिकेट देखा. ये सर्किट और ये सब व्हाट एवर, यू नो, रजिस्ट्री, आईसीज, एवरीथिंग इज देयर है ना. हु इज गोइंग टू टॉक? हाउ यू आर गोइंग टू टॉक विद ऑल दिस थिंग्स? राइट, सो सी प्रोग्राम से आप ये सब कुछ कर सकते हो. दैट इज द पावर ऑफ सी लैंग्वेज. राइट, व्हेन कंप्यूटर केम इन द वर्ल्ड, सी केम. And when the computer will end, होगा ही नहीं, but when it will end, C will end. That is the power of C language. Right? So this is something called as hardware. जो मैं अभी बोला, this is mechanical things, and this is something called as software. Set of programs. Program को जमा किया मैंने. One program is set of instruction. एक program तो set of instruction है. वैसे multiple programs if I collect, then that becomes a software. अभी हम लोग को मिनी प्रोजेक्ट करने का है. मिनी प्रोजेक्ट, तो मिनी प्रोजेक्ट यानी क्या? आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर. मुझे सॉफ्टवेयर बनाने का है, सॉफ्टवेयर लिखने का है. ऐसा सॉफ्टवेयर लिखने का है जो लोगों ने इस्तेमाल करना आना चाहिए. इफ आई डिजाइन अ कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर अगर सॉफ्टवेयर बनाया, so the people should use my calculator instead of ready-made calculator present in Windows or Linux or whatever.
Why they will use my calculator? Because my calculator has some much more features than that. फीचर ज्यादा दिया है ना और फुकट में दिया है तो वो पब्लिक यूज करेगा ही करेगा. Right, that is the purpose of why we have to write a software, and that is what is the need of the industry. We should know how to design the software, we should know how to write a software, we should know how to give the instruction to the computer which I need, not which I need, what the people need. Right, it's like a democratic country, लोगों ने लोगों के लिए लिखा हुआ प्रोग्राम, that is called as software. राइट, अदरवाइज मैं ही प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं ही यूज कर रहा हूँ प्रोग्राम को. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट राइटिंग द सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम विच आई एम ओनली गोइंग टू यूज. मैक्सिमम मेरा फ्रेंड यूज करेगा, उसको मैं भी जबरदस्ती बोला देख मैं प्रोग्राम लिखा है, देख तू यूज कर, हु इज गोइंग टू टेक माई प्रोग्राम. और ऐसा प्रोग्राम लोग बनाते हैं. इन इंडस्ट्री रन्स लाइक दिस. इंडस्ट्री टेक अ नीड ऑफ द पीपल, टेक द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल, and then they are going to start designing the software. Right, the requirement should come from the people. मैं खुद ही रिक्वायरमेंट करूंगा, मैं ही बोलूंगा भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, राइट, ऐसे ऐसे लिखने का, व्हाट आर द स्टाइल ऑफ प्रोग्राम यू आर स्टडीड, राइट. वो पास्कल ट्री बनाओ, फिबोनाची बनाओ, फैक्टोरियल बनाओ, राइट. तो ये इतना भी प्रोग्राम मैंने, इवन दो आई कलेक्ट द प्रोग्राम, हु इज गोइंग टू यूज दैट प्रोग्राम? नो वन इज गोइंग टू यूज द प्रोग्राम. आपके जूनियर्स खाली यूज करेंगे, राइट, वो असाइनमेंट लिखने के लिए, अदरवाइज नो बडी इज गोइंग टू यूज योर प्रोग्राम, राइट. बट नाउ this third semester onwards we have got this opportunity to create our own software, and that is the part of our the another subject altogether. That subject is called as mini project. Our Java programming subject JPL is a different subject. ये subject अलग है, वो subject अलग है, बट मिनी प्रोजेक्ट बनाने का जो टेक्नोलॉजी तो यही है, यही का ही है. जावा टेक्नोलॉजी से ही हम लोग को प्रोजेक्ट बनाने का है, राइट. सो दिस इज समथिंग, एंड देयर इज समथिंग अगेन कॉल्ड एज फर्मवेयर. इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ फर्मवेयर का मतलब क्या मालूम है? आपने रोबोट का नाम सुना रहेगा, रोबोट और रोबोटिक्स. व्हाट इज रोबोटिक्स? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन, राइट. तो वो बोलेगे सर अपना कंप्यूटर भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का ही कॉम्बिनेशन है ना, राइट, दैट्स फाइन, राइट. लेकिन अपना कंप्यूटर चलता है क्या? इधर के उधर, इधर से उधर चल रहा है क्या? कुछ काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. जब तक मैं इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ वो कुछ काम नहीं करेगा. जब तक मैं उसको ऑन नहीं करता हूँ वो काम नहीं करेगा. तो ये भी ऐसा है ना, ये ऑन किया तो वो भी नहीं काम करता है, फाइन. बट दैट हैज गॉट द डेडिकेटेड जॉब. रोबोट हैज गॉट डेडिकेटेड जॉब. ड्रोन टेक्नोलॉजी. व्हाट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी? this drone technology is also firmware technology, hardware and software का combinations. And these systems has got something called as intelligence. उसको ही हम लोग बोलते हैं artificial intelligence, right? And this is what is the programming. It is what is the need of programming. How you can able to make this firmware. Hardware को कैसे बोलने का कि भाई इधर जाके इधर का ग्लास उधर रख, उधर का ग्लास इधर लेके आ, पानी भर के ग्लास इधर लेके आ जा, right? How that machine will act and react, it depends upon how you do the program, how you run, how you design the software, right? And that is purpose of the firmware. The today is the world of firmware. Even though we are sticking with the software, but still it's the today is the world of firmware. Everybody knows what is the usage of drone technology. ड्रोन का जमाना चालू है भाई, रोबोटिक्स का जमाना चालू है. तो डजंट मीन कि सॉफ्टवेयर खत्म हो गया. ऐसे सॉफ्टवेयर ही है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, इसके लिए तो रोबोटिक्स है, इसके लिए तो ड्रोन है, इसके लिए तो सब कुछ है. आर यू गेटिंग? सो वी मस्ट अंडरस्टैंड हार्डवेयर, वी मस्ट अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर, एंड ऑल्सो इफ यू नो दिस, फर्स्ट दिस, देन सॉफ्टवेयर एंड देन फर्मवेयर, yes, then you are the winner of this current competition. ये करंट कंपटीशन में आप विनर हो जाओगे इफ यू नो दिस थिंग्स इन डिटेल. तो फिर मजा आएगा आपको, राइट, प्रोग्रामिंग करने के लिए. सो वी विल यूज ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स, राइट. एंड दिस जावा प्रोग्राम, राइट. तो ये जावा नाम आया किधर से? जैसे मैंने बोला सी नाम किधर से आ गया? बिकॉज ऑफ कंपाइलर सी है. सी स्टैंड फॉर कंपाइलर, राइट. व्हाट इज कंपाइलर? आई टॉक यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर? आई टॉक यू. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर? आई टॉक यू. And this is something called, and what happens, let's say सबको मालूम रहेगा ASCII कोड. ये मुझे लगता है कि सबने हैव जस्ट
recollect that in your from your SPA, topic ASCII code रहता है, ASCII code यानी क्या मालूम है? If I press A, internally the 8 bit डिजिट और 8 बिट सिग्नल जनरेट होता है, होता है। कौन करता है सिग्नल जनरेट? माइक्रो कंट्रोलर प्रेजेंट इन द कीबोर्ड, राइट? 8 बिट जनरेट करता है, राइट? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो कंप्यूटर, राइट? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके अंदर होता है EBCD IC कोड, EBCD IC कोड। दिस इज ऑल्सो 8 बिट, ये भी 8 बिट का है, राइट? लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना, ये ASCII कोड है, EBCD IC कोड है, तो सिग्नल्स आर डिफरेंट, सिग्नल्स अलग अलग है, राइट? नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिग्नल्स, राइट? सिग्नल्स यानी क्या? क्लॉक रेंज 5 वोल्ट डिजिट आता है, ASCII कोड। इफ आई प्रेस ए प्रेस किया तो क्या होता है? माने 1010, और 8 बिट का है ना, तो क्या होता है? पहले 0000 ऐड होते हैं, 0000, तो हाउ द सिग्नल विल कम है? 0000 1010, ये सिग्नल जनरेट हो गया। किसके लिए? 8 किया तो, और ये क्या है? ASCII कोड। नो EBCD IC का भी 8 बिट है, लेकिन EBCD IC में एक थोड़ा सा ये क्या मालूम है? द फर्स्ट बिट इज हाई, सो 1000 1010, ये EBCD IC का कोड का है। यानी इफ आई प्रेस A in mini computer, mainframe computer and super computer, so internally in the keyboard, right, I am working on the EBCD IC code. If I am doing the program in micro computer like laptop, PC, जो मैं बोला था, so then you are talking about the ASCII code. So definitely मेरा C program अगर मैं ASCII का कोडिंग का चेक कर रहा हूँ, how it will run on EBCD IC, how it will run on the different types of computers, that is the problem, right? तो इसके लिए now let's assume कि मैंने इंस्टेड ऑफ दिस मुझे अ टाइप करने का है, राइट? जैसे अभी मराठी में और इसमें देवनागरी लिपि है ना, अ ब क, तो ये अ टाइप कैसे होता है, राइट? हाउ द अ ब क ड और एनी अदर अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज हाउ योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स? ये कौन सा कोड है भाई? ना ये ASCII कोड है, ना ये EBCD IC कोड है, स्टिल माय कंप्यूटर, राइट? उसके अंदर मैं मराठी टाइपिंग कर सकता हूँ इफ आई एम एबल टू इंस्टॉल द मराठी फॉन्ट, इफ आई एम इंस्टॉल तेलुगु फॉन्ट, कौन सा भी फॉन्ट दुनिया का, जर्मन फॉन्ट, आई कैन एबल टू टाइप दैट पर्टिकुलर लेटर्स, राइट? एंड हाउ इट इज पॉसिबल? वो ASCII कोड भी नहीं है, EBCD IC कोड भी नहीं है, वो है यूनिकोड, और ये रहता है 16 बिट का, right? So I will not take much more time, I will continue with these points, right? I want to complete this something like the fundamentals of computers, right? Fundamentals of programming, right? So in the afternoon session I am going to take these basics, I will continue with this course, right? And I will complete the basics of all these programming things, and we are going to start with the concept of Java programming language, right? So my dear students, I hope that you understood whatever I covered all these basic points. These are very, very important, right? Whatever questions, whatever doubts you are having, in your mind as a fresh engineer, please ask me, I'm always here to solve your problems, right? And you don't worry about the conceptual level, I will definitely solve all the queries, whatever things are there in your mind, and I am damn sure that you will definitely progress in your programming thing, right? See, Aditya,